Okay, so welcome to Emacs coding classes, and this is VK Sinha here. Today I am going to talking about how can we perform the button and the action on the button. So in the previous class, we saw that that's all the things here. We have to take in a two text field and one buttons here I take into this. Two button I take this for the add and subtract. So here I have the two buttons B1 and B2, and when I'm clicking on the button, that's every button will be perform the different types of action. In the add logic will be the happen, and in the subtract logic will be the happen. So see, on I taken a label in the previous class, and finally I am going to show the result on this label, and we are added on the frame, on the Java frame. And here you have to see that on the button on the b1 dot add action listener method is responsible to listen the action on the buttons, and here I am passing the single abstract method, that is a functional interface, and inside this I am going to set the logic for the addition, and inside that I am going to set the logic for the subtraction. Now today what I am going to do, I am going to see the another way to the writing the code of this way your button will be the perform. So this is the right way. If you have the n numbers of buttons, so in the every button you have to set the logics into this way, right? This is a better way, but I am going to see the some oldest way that we have to understand another way of the coding also. We know that our button is responsible to listen your action, and that action listener interface class is responsible to perform your action in the action performed method, right? So हम इसकी वजह क्या कर सकते हैं कि ये हम क्या कर रहे हैं, ये B1 जो B2 है, तो मैंने इसको क्या कर दिया कि ये मैं कोड को यूज नहीं करूँ, मैं इस तरीके से यूज करने नहीं जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू यूज अनदर वे. सो आई एम गोइंग टू जस्ट रिमूव दिस कोड, एंड नाउ फाइनली आई एम गोइंग टू हियर आई एम यूजिंग दिस बटन डॉट. यहाँ हियर इनसाइड द कंस्ट्रक्टर I am just writing to this b1 dot add action listener method. So add action listener method is here. It's coming to this. Why is not coming? Dot add action. Sorry, it's working to that moment. b1 dot add action listener method will be there. Right here will be there. So add action listener method, and inside that I am going to pass this object, this pointer. This pointer is responsible to take the automatic, means indirectly, object of the action listener class, right? And also I am going to pass for the b2 dot add action listener method. I am going to use same, because this method is responsible to listen your action from the button. So this pointer I am going to pass here, right? So now I pass in the two things here. One is the b1 dot add action listener, b2 dot add action listener. This is the constructor inside it, right? So now here is giving this here, because this pointer is going to take the action. It will take your object of action listener. So what I am going to do here, I am going to implement through the is the second way I am going to talk about implements with the JF like एक्शन लिसनर इंटरफेस क्लास. तो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ एक्शन लिसनर से, और नाउ हमें एक मेथड इसके अंदर जो इम्प्लीमेंट करना होगा वो मेथड हमारा है. यहाँ से हमें गेट इट होगा, रेड वाले बॉल पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, नाउ इम्प्लीमेंट ऑल अब्स्ट्रैक्ट मेथड पर क्लिक कर देंगे. यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे वी हैव टू दिस नाउ पब्लिक वर्ड एक्शन परफॉर्म मेथड विल बी द ओपन. नाउ एरर विल बी आउट, and see on the bottom of there, यहाँ पर public void action perform method is coming here. Inside that this code I am going to the remove, and now here I am also going to the remove to this part, and here inside this action perform method I am going to write the logic here, because I have the two buttons here, right? So inside that I am going to first take the two numbers. I am going to read the data from the first text field n1, and here I am going to t1 is my first text field dot get text method I will use, and this one will be read the data in the string from our text field. Now I need to convert into the integer form, so I am going to use in the parenthesis form. This is the function will be the apply, and now I am use the integer like dot parse int method, right? So parse int method, it will convert your string into the integer, because get text method is read the data in the string form from the first text field, and it will finally convert it into the integer form. Same lines of the code I am just copying to this code, and now I am coming to the bottom of there. I am coming to here and paste it here.
and now here I'm going to the n2 is the my second variable, and here I'm using the second text field, that is the t2. That's it, right? So t2 is the second text field, so I read the first data from the first text field, and second data I am going to read from the second text field. My logic is here, I'm not going to the set the logic, I am just using the here one variable that will hold a result, and finally in that I am using the initial value is the 0 से set कर दे रहा हूँ इसको values को. And now here I am using the condition. I don't know user which button is going to the performing, which button is going to the click. So I will check the first button, which button is going to click by the users. So here I am going to use the if condition, and inside this if condition I am going to write the first my e is I am taking the reference here, action event is the reference. I will take here e dot one method will be accessed here, that is the get source. Get source, because which button is going to clicking by the user. So this get source method, it will listen your events from the button, which object, because you know that button is also your object. Everything in the Java is the object is going. So whatever is GUI, like graphical user interface, button, text field, and this everything is becoming looks like an object. We are going to create an object, right? That's why we are going to study about the object oriented programming, right? So get source method that we are taking to this, and get source method is responsible to which button is going to the clicking by the user, and it will listen the event. So I'm going to this source, I'm going to talk if equal to b1. अगर b1 को click किया है, so now I am going to set the logic inside the b1 button, and I am going to the say that is the values, because values I am taking this variable for the result, and 0 value initialize. On the values I am going to the set n1 plus n2, because हमारे बटन पर b1 पर क्या था, ऐड था, तो इसलिए हमने यहाँ पर एडिशन दिया हुआ है, ठीक है. Now I am going to the talking about that. So if this one is not right, oh sorry for this, if it is not going to the right moment, like b1 को नहीं प्रेस किया, तो ऑब्वियसली उसने b2 को प्रेस किया होगा, तो else कंडीशन में आया है, सॉरी else कीवर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, और इन द else we are going to the right, inside that values, right, values we are going to the right, and inside that values I am going to write n1 minus n2, right, is a subtraction code. But here I am not going to the use like this one, just I am going to use this code, and finally I have to the set the result. तो यहाँ पर result को मुझे set करना होगा लेवल पर, तो lk dot now set text. So set text method will be the come, right, and inside that I am just passing the values, is the my result is there, and concatenate operator I am taking to this, and now is a double quote is taking here, right, on the, because it will convert the this one is a string into the integer. By default set text method is taking the data in the string form, so we need to take the data in the integer form. That's why the integer is the values is the data form, and here is a string in the double quote, and we are going to the typecasting here. In same code I am going to write here like lk dot, and we have to use a set text, right, set text method we are going to the use, and finally I am going to the say values, and now we have to the set this, and finally convert into the integer form. So in that way we can perform. So I am going to check the if button b1 is going to the click, so this code will be the run. If b1 is not clicking, that b2 is going to the click. आप यहाँ पर इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, एल्स अगर मान लीजिए आपके पास n नंबर्स ऑफ बटन है, तो यहाँ पर लेडर आई फिल्स का यूज करिएगा, आप बोलिएगा एल्स एफ, और एल्स एफ लगाएंगे, सॉरी एल्स इफ को यूज करेंगे, और इसके अंदर आप राइट करेंगे फिर से ई डॉट गेट सोर्स मेथड को लेंगे और पूछेंगे कौन सा बटन क्लिक हुआ है, b1 नहीं है तो b2 है क्या, तो इक्वल टू b2, और इसी तरीके से एल्स एफ और यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं. कम टू दिस पॉइंट एल्स एफ, and here also you will be write the e dot like reference is the get source मेथड को यहाँ पर लेंगे, और यहाँ पर इक्वल टू b3 है क्या, तो इस तरीके से आप बटन को चेक कर सकते हैं, b1 b2 b3 b4 bn n नंबर्स ऑफ बटन यू कैन डू, और उसके अंदर आप अपने लॉजिक्स को सेट कर लेंगे, ठीक है. सो इन दैट वे वी कैन राइट द कोड that we have to in the previous class we have to understand, right. So here I had only 2 buttons, that's why I am taking this if else only.
तो हमने यहाँ पर क्या किया फाइनली, पिछले क्लास से अभी हम लोग क्या देखे कि पहले हम लोग अपने जे फ्रेम को एक्शन लिसनर इंटरफेस क्लास से इम्प्लीमेंट कराया, और इसको इम्प्लीमेंट कराने के बाद हम अपने बटन के अंदर B1 और B2 जो है इसके ऐड एक्शन लिसनर मेथड को सेट किया, और फाइनली दिस पॉइंटर पास कर दिया। ये जो पॉइंटर है ऑटोमेटिक इसके ऑब्जेक्ट को पास करता है एक्शन लिसनर का, ठीक है। और एक्शन लिसनर क्लास में एक मेथड है जो इंटरफेस क्लास के अंदर मेथड है, वो है एक्शन परफॉर्म मेथड। तो जब भी हम अपने बटन को क्लिक करते हैं तो वो जो बटन है किसको कॉल करेगा, इस मेथड को कॉल करता है, और इस मेथड के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो हमने पहले दोनों इस मेथड के अंदर दोनों टेक्स्ट फील्ड को रीड कर लिया, डेटा को इंटीजर फॉर्म में, और n1 और n2 पर स्टोर कर दिया, और वैल्यूज हमने एक वेरिएबल लिया है जो रिजल्ट को शो करेगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने एक्शन इवेंट ई के रेफरेंस से मैंने पूछा कि कौन सा गेट सोर्स, कौन सा सोर्स क्लिक हुआ है, कौन सा बटन क्लिक हुआ है। तो गेट सोर्स मेथड इट विल चेक विच बटन इज गोइंग टू द क्लिकिंग बाय द यूजर। सो मैंने कहा इक्वल टू अगर B1 है तो ये ऐड वाला वहाँ पर लॉजिक होगा। तो वैल्यूज हमने रिजल्ट के लिए लिया था और n1 n2 को ऐड कर दिया और फिर लेवल पर फाइनली सेट कर दिया। ठीक उसी तरीके से अगर ये B1 अगर क्लिक नहीं है तो हमें पता है कि दो ही बटन है, तो ऑब्वियसली B2 क्लिक हुआ होगा। तो उसके अंदर हमने जो वैल्यू है सेट कर दिया लॉजिक n1 माइनस n2, और लेवल पर हमने सेट कर दिया इस रिजल्ट को, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू रन टू दिस कोड एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड इजीएस्ट वे। सो फाइनली इट्स गोइंग ऑन द रन and now it's starting the your run the project, and we have to the see how is working this moment, right. It is taking some time little bit, it's going on, and it's a very excited process. Build is there, now it will be open, it's going on. Let's just background is going to the scanning by the, yeah, that's it's coming to this part. So I'm going to write that 3 4 and write 6 7 8 add this. तो add you can see adding here, right. अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए मेरे पास वैल्यू 4 6 6 और यहाँ पर 6 7 8 से सब्सट्रैक्ट पर क्लिक करते हैं तो देखो -2 2 2 दिया है, क्योंकि यहाँ पर 4 5 6 माइनस है 6 7 8 कितना हो जाएगा -2 2 2, right. So you can add and subtract by the following to this process, right. I hope everybody is getting to this point. Thank you to watching to this section.